Hello everyone. Hello. Welcome. I'm just testing something, so let me just see if the voice, etc., is working. Because I'm trying a different type of a mic, but let's see. Just testing. Okay, so it's working. Nothing's wrong with that, right? And yep. So let's start financial management. So today we will do financial management. Then we will do directing. Then financial market. I don't have the chapters NCERT. I will try to do it from notes or something like that. But yeah, that's it. And we will end the stream challenge or whatever you can say it. And yeah, I'm happy I'm doing it successfully. I'm completing it successfully. I completed both the books in the meantime in 3 days or more than or less than 3 days, I would say. So let's start financial market. Let's start with the syllabus of financial market. If I do this now, the syllabus, sorry, financial management. If I said market, then I'm sorry for that. Uh, I hope the voice etc. is clear. Yeah, financial management concept, role and objective. Concept है, role है, objective है. Then there's three financial decisions and the factors affecting them. The financial decisions of investing, financing, and dividend. Then the factors affecting them. Then we know about financial planning, its concept and importance, capital structure, concept and factors affecting capital structure, and fixed and working capital, concept and factors affecting their requirements. ठीक है? This is the chapter basically, and I will remove it so that there is no problem like usual. Financial management यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है? So 27 pages का chapter है in introduction. In the above case तो हम पढ़ते ही नहीं है, ठीक है? These decisions require careful plan, financial planning, understandability, blah blah blah. हमें नहीं मतलब, देखो हमें क्या करना, होने दो जो होना है, हम तो मीनिंग से समझ में आते हैं, ठीक है? मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस. लो, पहली डेफिनेशन आपके मुंह पे मार के भेज दी गई है. Almost all business activities require some finance. Finances need to be established a business to run it, modernize it, to expand it, diversify it. It is required for buying variety of assets which may be tangible like machinery, factories, offices, or intangible such as trademarks, patents, technical expertise, etc. Also, finance is central to running of day-to-day operations of business like buying material, paying bills, blah 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 blah. Thus, very crucial for survival of business. ठीक है, क्रूशियल तो होता है, पैसे के बिना कुछ नहीं है भाई, सीधी बात. Financial management. What is financial management? All finance comes at a cost. All finance. Well, everything has its cost. It is quite imperative that it needs to be carefully managed. Financial management is concerned with यहाँ पे definition आ गई है. Financial manager is concerned with optimal procurement as well as the usage of finance. For optimal procurement, different available sources of finance are identified and compared in terms of their costs and associated risks. Similarly, the finance of pronounced procured needs to be invested in a manner that the returns from the investment exceed the cost at which procurement has taken place. Financial management aims at reducing the cost of funds procured, keeping the risk under control, and achieving effective development of such funds. Okay, this is the goal of financial management. It also aims at ensuring availability of enough funds wherever required, as well as avoiding idle finance. Idle finance भी नहीं होना चाहिए, कम finance भी नहीं होना चाहिए, balance of finance होना चाहिए, वो तो simple सी बात है. Needless to emphasize, the future of a business depends on a great deal on the quality of financial management. ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्वालिटी पे सब डिपेंड करता है. इंपॉर्टेंस पे आ जाते हैं हम लोग.
The role of management cannot be overemphasized since it has a direct bearing on the financial health of a business. The financial statements such as balance sheet and profit and loss account reflect the firm's financial position and its financial health. Almost all items in the balance sheet statement for business are directly or indirectly through some affected through some management decisions. फिर से आवाज को देख लेता हूँ, सही जा रही है? सही जा रही है. Some some prominent examples of the aspects being affected could be as under. देखो सबसे पहले क्या है, साइज एंड द कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस. तो यहाँ पे मैं आपको एक बैलेंस शीट बना के अभी समझा दूंगा. पहले तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिर है क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल. ठीक है. With an increase in the investment in fixed assets, there is a commensurate increase in the working capital requirement. जब fixed assets बढ़ते हैं तो working capital requirement भी बढ़ जाती है. ठीक है. ये थोड़ा सा ऐसा पॉइंट है जो आदमी को पता हो तो अच्छी बात है. तो क्वांटम, अरे रेड नहीं करना था. The quantum of current assets is also influenced by financial management decisions. In addition to decision about credit and inventory management, affect the amount of debtors and inventory, which in turn affect the total current assets as well as their composition. ठीक है. The amount of long-term and short-term funds to be used. Financial management, among other, involves decision about the proportion of long-term and short-term funds. An organization wanting to have more liquid assets would raise relatively more amount of on a long-term basis. There is a choice between liquidity and profitability. देखो ये बात है, there is a choice between liquidity and profitability. या तो आप liquidity रखोगे बढ़िया सी, या तो profitability रखोगे. ठीक है. The underlying assumption here is that current liabilities cost less than long-term liabilities. ठीक है. ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट इक्विटी एक्सेट्रा. ठीक है. तो अब लॉन्ग टर्म कितना चाहिए, शॉर्ट टर्म कितना चाहिए, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में भी डेट कितना चाहिए, इक्विटी कितना चाहिए, वो सब आपको देखना पड़ता है. और उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, वो हम आगे पढ़ेंगे. ऑल आइटम्स इन P&L अकाउंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, एवरीथिंग, ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Higher amount of debt means higher interest. Similarly, use of higher equity may entail higher payment of dividends. Similarly, an expansion of business which is a result of capital budget and decision is likely to affect virtually all items in the P&L account. तो सीधा बात ये कह रहे हैं, it can thus be stated that financial statement of a business are largely determined by financial management decisions taken earlier. ठीक है. Future financial statements would depend upon the past as well as current financial decisions. Thus, the overall financial health of a business is determined by the quality of financial management. ठीक है. ओवरऑल पूरा बता देता है. गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एट अ लोअर कॉस्ट. अच्छा, अब मैं थोड़ा सा समझाता हूँ. ये है बैलेंस शीट. कितनी बढ़िया बैलेंस शीट है, वाह. यहाँ पे है लायबिलिटीज, यहाँ पे है एसेट्स. यहाँ पे आपकी सबसे पहले शेयर होल्डर फंड होता है. ठीक है. तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड है आपका. अब शेयर होल्डर फंड के भी अंदर आपके पास क्या है, डेट है, इक्विटी है, फिर आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी है अपनी. ठीक है. लॉन्ग टर्म फंड है. फिर आपके पास करंट लायबिलिटी है अपनी. यहाँ पे आपके पास क्या है, नॉन करंट एसेट है, यानी कि PPE एंड इंटेंजिबल एसेट है. अरे ये ई क्यों बना दिया. नॉन करंट एसेट है और करंट एसेट है. अब करंट एसेट के अंदर क्या है, एक तो करंट मतलब नॉर्मल वाले करंट एसेट हैं, और एक बिल्कुल लिक्विड एसेट्स हैं जो कि बिल्कुल कैश नियर कैश होते हैं. ठीक है. तो ये लिक्विड एसेट्स हैं. तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर चीज को फर्क पड़ता है. तो आप इम्पोर्टेंस कैसे बताओगे कि शेयर मतलब कितना फंड कंपनी उठा रहा है, वो फर्क पड़ता है. एक मिनट, यहाँ ड्राइंग का कलर चेंज करो. यहाँ पे ये ब्लू. हाँ.
तो कितना वो उठा रहा है कंपनी फंड्स, वो फर्क पड़ता है। नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, करंट लायबिलिटी कितनी है, इनमें से मतलब क्या कंपोजिशन है इनका, ये फर्क पड़ता है। और फिर मतलब फंड उठा रहे हैं उसमें से वो डेट कितना है, इक्विटी कितना है, वो फर्क पड़ता है। करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स कौन से यानी कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट कौन सी लेना है, वो फर्क पड़ता है। करंट एसेट्स कौन से हैं, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, वो फर्क पड़ता है। करंट एसेट में भी ब्रेकअप है उनका, करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और कैश नियर कैश एसेट्स में, तो उसमें भी यही फर्क पड़ता है। उसके बाद जब आप पी&एल बनाते तो पी&एल भी पूरा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल सब इसी से फर्क पड़ता है। आरएफओ बनाओगे, यहाँ बंद करोगे, फिर एक्सपेंसेस लिखोगे यहाँ पे, फिर यहाँ बंद करोगे, फिर माइनस करके प्रॉफिट निकालोगे, फिर टैक्स डालोगे, फिर पीएटी आएगा आपका। और ये सब फर्क पड़ता है क्योंकि सारे एक्सपेंसेस इसी से डिटरमाइन होता है, रेवेन्यूज कि आपके सोर्सेज इनसे डिटरमाइन होते हैं। तो इम्पोर्टेंट मतलब आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिख लेना है। और लास्ट में आप ये लिख सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस आर लार्जली डिटरमाइंड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस टेकन अर्लियर। ठीक है, बात आ गई समझ में, आगे बढ़ते हैं। Objectives. The primary aim of financial management is to maximize shareholders' wealth, which is referred to as the wealth maximization concept. ये बहुत ज़्यादा important है, इसको कम important बिल्कुल नहीं मानना। Wealth maximization concept is the most important concept in the whole chapter. ठीक है। The market price of a company share is linked with three basic financial decisions, which you will study later. ठीक है, financial decision पढ़ेंगे। This is because of company funds belong to the shareholders, and the manner in which they are invested and the return earned by them determines their market value and price. It means maximization of the market value of equity shares. यानी आप इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ाओगे तो शेयर होल्डर की वेल्थ तो अपने आप बढ़ेगी ना। तो आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन आपको मार्केट वैल्यू बढ़ानी है शेयर की। द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीजेस इफ द बेनिफिट फ्रॉम अ डिसीजन एक्सीड्स द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। ऑल फाइनेंशियल डिसीजन एम्स एट ensuring that each decision is efficient and adds some value। तो देखो, अगर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करा है उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता है तो आपका शेयर होल्डर का वो मतलब शेयर मार्केट में आपके शेयर की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, therefore those financial decisions are taken will ultimately prove gainful from the point of view of the shareholders. The shareholders gain if the value of shares in the market increases। एक मिनट, सब सही चल रहा है, आई होप सब सही चल रहा है। Those decisions which result in decline of the share price are poor financial decisions. Thus, we can say the objective of financial management uh, is to maximize the current price of equity shares of the company or to maximize the wealth of the owners, that is the shareholders. Therefore, when a decision is taken about investment in a new machine, the aim of the financial management is to ensure that the benefits from the investment exceed the cost, so that some value addition takes place. Some value addition to hona chahiye. Similarly, when finance is produced, the aim is to reduce the cost so that the value addition is even higher. When finance is procured, the aim is to reduce the cost so that the value addition is even higher. In fact, in all financial decisions, major or minor, the ultimate objective that guides the decision-making process is some value addition to take place. Some value addition तो होना ही चाहिए, value addition, ठीक है। All those avenues of investment, modes of financing, ways of handling various components of working capital must be identified, which will ultimately lead to an increase in the price of equity share. Main क्या है कि increase in price of equity share, ठीक है। Decision making is efficient if out of the various available alternatives, the best is selected. Financial decisions, ठीक है। फाइनेंशियल डिसीजन पढ़ेंगे, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। कौन से हो गए? इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। इन्वेस्टिंग में आ जाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, इन्हीं को कह देते हैं, और वर्किंग कैपिटल भी यहीं आसपास आ जाएगा।
फाइनेंसिंग डिसीजन में आपको ये देखना पड़ता है डेट उठाओगे कि इक्विटी, तो उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग देम होता है। और डिविडेंड में आपको ये देखना पड़ता है कि कितना आप मतलब जो आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें से ये आप बचा के रख रहे हो, ये आपने शेयर होल्डर में बांट दिया, तो कितना बचा के रख रहे हो, कितना शेयर होल्डर में बांट दिया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द सॉल्यूशन of the financial no, three major issues relating to the financial operations of a firm, corresponding to the three question of investment, financing, and dividend decisions. In a financial context, it means the selection of best financial alternatives or best investment alternative. The finance function, therefore, is concerned with three broad decisions. ठीक है, finance function सिर्फ three broad decisions में काम करता है, which are explained below. सबसे पहले आ गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन. Firm resources are scarce in comparison to the uses to which they can be put. A firm therefore has to choose where to invest these resources so that they are able to earn the highest possible return for their investors. The investment decision therefore relates to how the firm funds are invested in different assets. Investment decisions can be long term and short term. Long term investment decision is called capital budgeting decisions. ठीक है, ये मेन चीज हो गई. It involves committing the finance on a long term basis. For example पढ़ते नहीं है, the size of assets, profitability and component are all affected by ठीक है, सब affect होता है इससे. Moreover, these decisions normally involve huge amount of investments. um, irreversible except a huge cost. irreversible होते हैं, या तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगी, और ये मतलब डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसी वजह से. ठीक है, हाँ, तो शेयर होल्डर की वेल्थ को आपको मैक्सिमाइज करना है, ये आप देख लो. तो एक आप क्या कर सकते हो कि शेयर का प्राइस बढ़ा दो, और एक क्या कर सकते हो, आप उसे डिविडेंड दे दो. तो आपको दोनों करना पड़ता है. ठीक है, दिस इज क्या, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट. The decision must be taken by those who understand them comprehensively. A bad capital budgeting decision normally has the capacity to severely damage the finance fortune of the business. ठीक है, short term investment also called working capital. uh, अच्छा, ये ऐसे नहीं होगा. Also called working capital decisions are concerned with the decisions about the levels of cash, inventory and receivables. कैश कितना, इन्वेंट्री कितना, रिसीवेबल कितना है, वो सब वर्किंग कैपिटल डिसीजन से देखते हैं. ओके, तो when we talk about investing decisions, there are short term and there are long term. Short term are called capital budgeting decisions. ये बहुत ज्यादा irreversible होते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इनसे, बहुत टेक केयर से लेने पड़ते हैं, एंड कैपेसिटी टू सीवियरली डैमेज. क्या, और ये वाले होते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजंस. इनमें इतनी ये रिवर्सिबल भी होते हैं, and it is about the level of cash, inventory and receivables. ठीक है, these affect the day to day working of a business. These affect liquidity as well as profitability of a business. Efficient cash management, inventory management and receivables management are essential ingredients of a sound working capital management. ठीक है, अब आ गया factors affecting capital budgeting decisions, then आएगा factors affecting working capital decisions. A number of projects are available to a business to invest in, but each project has to be evaluated carefully. Depending upon the returns, a particular project is either selected or rejected. If there is only one project, the viability in terms of the rate of return investment and its comparability with the industry's average is seen. There are certain factors which affect the capital budgeting decision. Okay, so capital budgeting decisions को क्या क्या फर्क पड़ता है वो हमें देखना है. अभी अपन 4 मिनट पर पेज के हिसाब से चल रहे हैं, तो 27 पेज करने में 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा इस चैप्टर में भी. ठीक है,
कोई बात नहीं, जितना भी टाइम लगे। ये आवाज बहुत तेज हो रही है क्या? अब हो सकता सही हो, अब हो सकता सही हो, ठीक है। अब थोड़ा आवाज बढ़ानी पड़ेगी, हो सकता तो। Cash flows of the project. When a company takes an investment decision involving huge costs, it expects to generate some cash flows over a period. ठीक है। Um, these cash flows are a form of series of cash receipts and payments over the life of an investment. The amount of these cash flows should be carefully analyzed before considering the capital budgeting decisions. देखो ये देखना पड़ता है कि आपके पास कैश तो आएगा, लेकिन कितनी देर बाद आएगा, है ना? उतनी देर तक का आपके पास कैश लगाने को है भी कि नहीं है। सो एक्सपेक्ट्स टू जनरेट सम कैश फ्लोज ओवर अ पीरियड। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ता है कि कब तक मिलेगा। सिर्फ ये बात नहीं होती कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है, अभी ये रेट ऑफ रिटर्न बता रहा है कि कितना मिलेगा। ये बात भी होती है कि कब तक मिलेगा, जल्दी मिलना चाहिए, है ना? द मोस्ट important criterion is the rate of return of the project. The rate of return of the project. These calculations are based on expected returns from each proposal and the assessment of the risk involved. Suppose there are नहीं, मैं नहीं देख रहा। The investment criteria क्या होता है? The decision to investment in a particular project involves a number of calculations regarding the amount of investment, interest rate, cash flows, and the ROR. ठीक है। There are different techniques to evaluate investment proposals, which are known as capital budgeting techniques. These techniques are applied to each proposal before selecting a particular project. तो ये आपका तरीका होता है कि आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या दिमाग लगा के कर रहे हो, तो वो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स होती हैं, वो जो कि हमें अभी पढ़ाई नहीं गई है। ठीक है, बड़े होंगे तो हो सकता पढ़ाएंगे। This decision is about the quantum of finance to be raised from various long-term sources. Short-term resources are studied under the working capital management. ठीक है। It involves identification of various available resources. The main sources of funds for the firm are shareholders. Funds are borrowed funds. The shareholders fund and borrowed funds. The shareholders funds refers to the equity capital and the retained earning. Borrowed funds refers to the finance raised to debentures and other form of debt. है ना? ये तो सिंपल सी चीजें हैं, ऐसे क्या अंडरलाइन करना। A firm has to decide from the proportion of funds to be raised from either resources. Based on their basic characteristics, interest on borrowed funds have to be paid regardless whether or not a firm has earned a profit. Likewise, the borrowed funds have to be repaid at a fixed time. हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारा the cost of each type of finance has to be estimated. हाँ, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हैं, वो अच्छे से बता देंगे, तो वही, ठीक है। सॉरी फॉर दैट अगर आवाज हुई है, ठीक है। Factors affecting financing decision. जो भी वहां पे लिखा था, ये सब जो भी लिखा था ना, वो नीचे बता देगा सब, ठीक है। ये वाला एक बहुत अच्छा वो है, लेकिन मैं इसे थोड़ा बाद में देखूंगा अभी, ठीक है। सबसे पहले कॉस्ट। कॉस्ट इज इम्पोर्टेंट। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू डिफरेंट sources are different. A prudent financial manager would normally opt for a source which is the cheapest, ठीक है। फिर रिस्क देखते हैं। रिस्क एसोसिएटेड विद ईच रिसोर्सेज इज डिफरेंट, ठीक है। फिर फ्लोटेशन कॉस्ट। हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट, लेस अट्रैक्टिव द सोर्स। क्या है? हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट, लेस अट्रैक्टिव द सोर्स। तो इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। कॉस्ट जो होती है वो है कि जब फंड्स रेज करने की कॉस्ट होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। फिर रिस्क, किसी में रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है, किसी में रिस्क कम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फिर होगा फ्लोटेशन कॉस्ट, जो मतलब कैपिटल रेज करने की, जैसे इशू ऑफ शेयर्स करने के लिए बहुत सारे फ्लोटेशन कॉस्ट लगते हैं, इधर कहीं कॉस्ट लगता है, उधर कहीं कॉस्ट लगता है, एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं, ठीक है।
तो ये सब मतलब जितने कम हो उतना अच्छा है। उस हिसाब से आपको ये सब ध्यान में रख के डिसीजन लेना पड़ता है। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ अ कंपनी, अगर स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन है तो डेट फाइनेंसिंग मोर वायबल है देन फंडिंग थ्रू इक्विटी। इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर आपके पास बहुत सारा कैश रखा हुआ है तो आपको क्या है, आपको इंटरेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर पास कैश नहीं है तो आपको इक्विटी डायलूट करनी पड़ेगी। अब देखो, इक्विटी डायलूट करना कोई अच्छी बात नहीं होती है, राइट? आपका डिसीजन मेकिंग पावर भी डायलूट हो रहा होता है। सो व्हाट यू डू इज दैट, अगर आपकी कैश फ्लो अच्छी है तो आप डेट ले लेते हो और इंटरेस्ट पे कर देते हो, है ना, इक्विटी डायलूट नहीं करते हो। और अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन बेकार है तो आपको फिर इक्विटी लेनी पड़ेगी ताकि थोड़ा सा फंड आए। उसमें आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ता है, तो वो आसानी हो जाती है आपके लिए, है ना। तो जैसे शार्क टैंक पे जब मैं देखता हूँ तो बहुत सी कंपनी आती हैं जिनका कैश फ्लो पोजीशन बहुत वीक है, जिनके पास वर्किंग कैपिटल 2-4 महीने से भी कम का बचा रहता है। अगर उसके बाद किसी ने फंडिंग रेज नहीं कर पाई तो बस उनकी कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी ठप पड़ जाएगी, इतनी बुरी हालत हो जाती है, अगर आप समझ पा रहे हो तो। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक शेयर्स ऐसे खरीदते हैं, मतलब शेयर्स देते हैं, ना कि वो डेट उठाते हैं, वरना उनके पास डेट का इंटरेस्ट देने के लिए पैसा नहीं है ना। हाँ, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इफ अ बिजनेस हैज हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे कि बिल्डिंग रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, it must reduce fixed financing cost. Hence, lower debt financing is better. Similarly, if fixed operating cost is less, more debt financing may be preferred. ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आपके पास, देखो, आपका P&L अकाउंट बनाते हैं, आपका P&L अकाउंट बनेगा बिल्कुल बढ़िया से। अब यहाँ पे आपके बहुत सारे फिक्स्ड एक्सपेंस है, यहाँ पे एक्सपेंस होते हैं ना, यहाँ पे एक्सपेंस होते हैं, यहाँ पे रिसीट्स होते हैं आपके। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे फिक्स्ड है, मतलब ये तो आपको हर साल देना ही है। तो अब क्या है, जब इतना भरा हुआ है एक्सपेंस पहले से, यहाँ पे मान लो नेट प्रॉफिट है, तो आप और कहाँ से डेट लो, क्योंकि डेट में आपको फिर से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आपका फिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिक्स नहीं बढ़ना चाहिए, इसीलिए आप क्या करोगे, आप इक्विटी दोगे, डेट नहीं दोगे। ठीक है, और मान लो आपकी बिल्कुल अच्छी है, आपका पूरा एक्सपेंस वाला खाली रहता है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बिल्कुल नहीं है, तो आप कहोगे कि मैं इक्विटी क्यों डायरेक्ट करूँ, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं थोड़े और एक्सपेंस जोड़ देता हूँ, मैं डेट खरीद लेता हूँ, है ना। क्योंकि इक्विटी लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर वो डायल्यूट होती है ना। देखो यहीं पे आ गया कंट्रोल कंसिडरेशन। व्हाट इज कंट्रोल कंसिडरेशन? इट बेसिकली मींस कि अगर आप इक्विटी शेयर दोगे तो आपका पूरा वो बेकार हो जाएगा। देखो, इशू ऑफ मोर इक्विटी, इक्विटी में लीड टू डायल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर बिजनेस। ठीक है, इन्वेस्टर आके अपनी अपनी चलाएगा, बेसिक फैक्ट। डेट फाइनेंसिंग हैज नो सच इम्प्लीकेशन। डेट फाइनेंसिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। कंपनीज अफ्रेड ऑफ अ टेक ओवर बिड शुड प्रेफर डेट ओवर इक्विटी। अब है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का स्टेट क्या है, क्या इक्विटी आसानी से मिल रही है, क्या अपन लोग बूम में हैं, है ना। अगर शेयर मार्केट बूम चल रहा है तो सब लोग खरीद लेते हैं, सब लोग शेयर भी बेच देते हैं, है ना, क्योंकि लोग खरीद रहे होते हैं। अगर मार्केट, अगर शेयर मार्केट, निफ्टी, सेंसेक्स सब ऐसे 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 ऊपर जा रहा है तो सब बेच देते हैं कंपनी वाले, और लोग खरीद भी लेते हैं। और अगर नीचे जा रहा है तो समझ में आ रहा है कि शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर ऊपर जा रहा है तो वो कहेंगे खरीद लेते हैं। तो दिस डिपेंड्स ऑन द कि कहाँ पे मार्केट चल रहा है, अभी मार्केट बूम में है या फिर अभी मार्केट रिसेशन में है। ठीक है, दिस ऑल्सो मैटर्स। The choice of source of funding during the period when stock market is raising, more people invest in equity. However, depressed market, capital market में issue of equity shares में problem कर सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब डिविडेंड डिसीजन देखते हैं, उसके बाद हम लोग वो फिगर देखेंगे, वो अच्छा फिगर है। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला डिविडेंड डिसीजन देखते हैं। उससे पहले देखें टाइम कितना हो गया। 29 हो गया। 8 4 जा 32। हाँ, तो थोड़ा सा हम आसपास चल रहे हैं, 2.5 मिनट के।
on 2 minute per page. The third important decision that every finance manager has to take relates to distribution of dividend.
Hello, 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 hello. Sorry for the interruption.